Hello, Kaustubh sir. Hello, Mahesh sir. Hello. Good evening. Yes, Kaustubh sir, this is Mahesh sir. Mahesh Bhatia sir. He have total work experience of 32 years in the construction industry with a strong base in business development and strategic operations and management of multiple projects. Actually, he is from the family where his grandfather was chief engineer for Hindustan Construction Company and instrumentation. Yeah. Oh, Yeah. okay. And now he is currently concentrating on providing guidance to small companies in their infancy to invest their resources in real estate. Yes, sir? Okay. Yeah. Okay. Right Yeah. on point. Great. Yeah. Yes, Right on sir. point. Yeah. Okay, sir. So, Welcome, sir. Welcome. It's a great pleasure getting your knowledge and guidance for us and for my lovely students. So, with your kind permission, shall we start the interview, sir? Yeah, of course. Yeah, we are very excited and we know we are going to have a gala time. Yeah. Yeah, we will. We Um, will. yeah, absolutely. Sir, first of all, we would like to understand in brief the story of your career. How did it all start? Was it because of your granddad that there was a natural progression for you into civil engineering, or was it something like other than that? See, since it is all in the family, and it is but natural that you get attached to that field, not only attract, but you get attached. And with the legacy that I was born in, with with the background of Sudan Block, and him being a pioneer in the construction of mushroom type overhead tanks all over India, I was naturally attracted. But as and when I joined, when I grew up, and I joined very young, I joined the company while I was doing my diploma. So I used to Okay, go to sites on and off. After college hours, I never used to. He used to take me as a driver, and I used to learn everything. I used to be with him, learn from the best because he was the best. I was always the best. Picked up all that, and being into the same field. Uh, sir, you need to unmute yourself. Yeah. Yeah. so yeah. So from there, as I used to travel with him at various sites all over Maharashtra at that time. It was I had he had works in Roha, in Bombay, in Pune, in Ahmednagar, औरंगाबाद, कोल्हापुर. तो उस टाइम पे काफी ट्रैवल भी हो जाता था उनके साथ बैठ के सीख भी लेते थे तो दैट इज हाउ आई दैट वाज इंटरेस्ट आई gained and the knowledge also I gained because of that. That is great. So that is how your journey started. So in the Yes, past that's how 32 years, sir, how yeah, so, sir, because last time when we used to meet pretty frequently, you were associated with NCC, the yes, Nagarjuna sir. Construction Yeah. Company. So in this span of 32 years, Yeah, see, which there all is companies you have represented? life में बहुत ups and downs होते हैं and Yeah. one should not be scared of that. तो beginning as you told me, as you asked me, beginning तो ऐसा ही हुआ and फिर मैं earth moving में भी घुसा. We were into earth moving. I was doing some works for contractors. I was associated with contractors working for Krishna Kore and वहाँ पे थोड़ा Okay. सा financial difficulties generate होने लगे. And meanwhile, I was also into government contracts with defense. तो उधर भी थोड़ी financial issues आ गए. So naturally, you have to run your show, and I got and because to run the show, you have to do something. Alternative रास्ता तो निकालना ही है. Family run Makes करनी है, sense. सब कुछ करना है. You shouldn't be scared of whatever you do. Smile and go ahead. Never say never. ये तो मोटो है ही सब सिंधी लोगों का. उसमें हम भी थे. And I got selected in NCC. नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिलेक्ट हो चुका था तब तक एंड आई वाज गिवन अ जॉब ऑफ मजगांव डॉक. वेरी डिफिकल्ट. वो भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट था, नेवल कॉन्ट्रैक्ट था. इट वाज अ 220 crores job. Oh, oh. That got selected there, and that is how I came in touch with you. Right, right. Yeah.
This was in 2011, I think. 2011, sir. Yeah, Yeah, 10, that 10, was 12 years back. 11 years back. Correct, correct. Yeah, you are So, young chap yeah, pretty young, sir. then. Maybe it must have been 2013 rather than 2011. Must have been Uh, 2013 at around no, 12. No, maybe it was 11. I came in contact with you in 2011 because I started 11. my because उस time पे ऐसा था कि I need to update myself and Yeah, yeah. yeah, I wanted to update myself. The engineers there at site were young. They had their tools, which I was not aware of, not frequenting those tools, computer mostly. So I came to you and I joined this CAD classes, where I learned thoda AutoCAD. Then I learned project planning. But and you gave and very kind of you that actually initially it was only a 27-week course because I was only coming on Sundays, if you can Yeah, recollect. yeah, yeah, yeah. Yeah, only Yeah, on yeah, you Sundays. were at Mumbai and yeah, It yeah. was 27-week course and it took me about 2 years, more than 2 years to complete, and that also in two parts. One because because of lack of time. I used to come, sometimes not come. It was but natural. Yeah. Yeah, that was how it was. It was So long back. Your kids were school going then. We used to yeah, have those small discussions about that. That was yeah, great. yeah, yeah. So what was the project about, and what was your role, and what is the projection? Because a lot of the my students who are listening to you or who listen to you on YouTube are also civil engineers who will make their careers in project management. So can you give a brief Yes. about that Mazgaon Dock project? It was, I think, a naval project, and the complexity involved in project management, and what was your role there, and what kind of See, softwares and all were used in that? Yeah. I was a project in charge. So and naturally, all the reporting was done to me. Be it electrical, be it mechanical, be it electromechanical part, the project and civil, of course, and prefabricated building was also there. So everyone was reporting to me. Naturally, there were four different cases, four different fields, and it is not that I was only limited to civil engineering or something of that sort. So I had fabricators, I had electrical engineers, we were having panel boards which were IP64 grade, being very close to the sea. Then in fabrication, we were getting the fabricated, prefabricated structures from Pune. Uh, that Okay. was up. And civil contracts, so actually civil part was at site. Civil to sub site pe hota hai. We were laying ballastless rails in that time. यानी so that was also a part. So some engineer was there, and we had to not only see today when you see a advertisement in an online portal, someone has to lay a ballastless rail in metro line. So only engineers who have done it earlier. But Okay. उस ऐसा कोई नाम नहीं था कि बलास्ट नहीं हो ये नहीं हो. We used to always have we used to train the people at site, and of course उस time पे because the site, because of the complexity and of the work, with so many fields, so many we can assume that that work I had split it into a number of small parts, and every engineer had to give his maximum output based on that. During that time, planning engineering ऐसा करके कोई नाम ही नहीं था. So we had to Okay. train young chap कि एक फ्रेशर को हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था कि यू लर्न दिस बिकॉज यू आर यंग, यू हैव सम टाइम मोर देन अस, and you take this online course of this AutoCAD, and already they were doing, and you do this MSP, do this project planning, and you already done Gantt and bar charts in your college. तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है उनके लिए. तो दिस Correct. इंजीनियर, या तो ऐसा नहीं था कि दे आर टोटली विदाउट बेस, दे हैव सम बेस. अभी के जो इंजीनियर्स है, ये 32 साल पहले जो इंजीनियर्स थे वो बेसलेस थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी. हमारा आगे ड्राफ्टर था, एक पेंसिल था, एक पेन था, एंड यूज्ड टू वी हैव डन आवर इंजीनियरिंग दैट वे.
अभी का जो है now they have got so many tools, they have ITs and everything, all those subjects, so it is easier for them. So of course AutoCAD is there, then project planning and management is there, MSP is there. There are so many different things what we were involved with in our, and that is the reason I had to come to you, because I was not aware of all this, and I didn't want to get myself out of the this running. बच्चों के सामने तो हम लोग थोड़े तो we should be knowledgeable. Absolutely, absolutely. Yeah. Mahesh sir, when you say that this project was complex, what attributes of the project made it a what was the complexity all about? When you mention it is complex, what made it complex? What See, happens on the field actually? see when Can you when elaborate some anecdotes or stories which can yeah, I'll tell you. give insight about So the complexity? thing Yeah. is, when you take a contract, many a times, unfortunately, the contract engineer is not aware of the site conditions. He just takes the Okay. contract just because एक तो आजकल में इंटीग्रिटी है नहीं, यानी स्टाफ डजंट हैव इंटीग्रिटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वो आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करते हैं, एंड देन suddenly you find that 6 months down the line, because the contract is going in a loss, and they know that some ऊपर से बॉसेस का कोई ना कोई तो गाली खाने ही वाला है, तो यू रन अवे. तो एक तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे बच्चों को ये सिखाना है, द फ्रेशर्स, that they should work with a long term planning, because the company is already investing in them. कि उनको नॉलेज देते हैं, उनको इम्पार्ट करते हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं. इट इज नॉट ओनली कि उनको सैलरी देते हैं, दे आल्सो इम्पार्ट सम पार्ट ऑफ देयर नॉलेज. उनके बॉसेस उनको नॉलेज इम्पार्ट करते हैं. इट इज नॉट जस्ट गिव एंड टेक सिस्टम. तो वो तो होना नहीं चाहिए. एंड दूसरी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो भाई गड़बड़ में, जस्ट टू मैच अप द व्हाट यू कॉल दैट, मार्च 31st का डेडलाइंस बोलो या कुछ बोलो, कि मेरे को इतना टर्नओवर मेरे को ये साल में दिखाना है. यू टेक अप कॉन्ट्रैक्ट्स लेफ्ट राइट सेंटर, यू समटाइम्स डोंट लुक. एंड बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दिस इज वेरी रैंडम इन बिग लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में से सपोज 5 लॉसेस में, तो 5 में तो हम लोग निकाल ही देंगे. तो एंड डिसाइड, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है, थोड़ा टाइम लैग मिलता है, लूप होल्स, तो आर्बिट्रेशन वगैरह 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 होता है. तो दैट इज वेयर दे मेक अप, एंड दैट इज हाउ दे वर्क टुडे. दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट इन गवर्नमेंट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स. तो एनीवे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसमें there was so many parts. There was piling, there was, and besides it was touching the sea. This is a naval Mazgaon dock के अंदर काम था, and this was right on the sea. We were and this was retractable roof systems. This was very new in India. तो उसके रूफिंग के लिए कोई आदमी, तो दिस वाज स्टैंडर्ड. जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो अपना मेजरमेंट के हिसाब से या किलो के हिसाब से या वेट के हिसाब से उसने रेट कोड कर दिया. बट एट साइड व्हेन यू रियली वर्क, इट इज डिफिकल्ट. प्लस टाइम, जो लिमिटेड टाइम में जो काम करना पड़ रहा है, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया. So you only have got n number of hours per day to work. ऐसा नहीं कि this is where everyone should also be aware that it is not only that आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कोड करते हो, क्या करते हो. You should be also aware of the geo political issues whenever you quote, because at that time you come to know the resources, and this is helpful. But this comes in, ये बाद में दिमाग में आता है. ये टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग के टाइम पे आना चाहिए कि उस टाइम पे क्या होता है, Okay. रिस्ट्रिक्शंस कितना है, कितने यूनियंस के साथ आपको लड़ाई करना पड़ता है. देयर आर सो मेनी लेबर यूनियंस आल्सो यू हैव टू talk to, negotiate with. So this is how we have to do. So the complexity was because of that majorly. And once you undercoat, then undercoat के टाइम पे तो फिर it is always a problem कि उसको matchup कैसे करना है, speed up कैसे करना है within that time frame. You always hand to mouth in that, be it any company. Resources shortfall हो जाते हैं फिर. Okay. So एक तो site condition, then the business scenario in which contract was initially taken up,
and by the time this lands upon execution phase, there are a lot of constraints, and there are site issues, then resource scarcity. So all these is a kind of environment or ecosystem in which projects happen. All right. Pratiksha, just pause the recording for a second. Yeah. Just a second. So is this the usual scenario on most of the EPC projects where there is scarcity of resources, then you are running after time, Yeah, and then see, there's financial as I year told end and you everything? earlier, that match करने के लिए, to touch that turnover, कभी कभी जो फ्रेशर्स हो जाते हैं, कभी कभी वी कीप वी एम्प्लॉय स्टाफ जो थोड़े बहुत जिनका नॉलेज थोड़ा कम होता है, Okay. एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी हम हमारे इसमें इम्पार्ट हो जाते हैं, तो इन दैट केस Now, on this particular project, sir, how was MSP deployed? जो EPC contracts are between the government and between the other stakeholders, how MSP played a role, and how far those reports and everything was generated. सी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में या अदरवाइज यू नीड टू हैव एंड वॉट एवर यूर कोटेड यू स्टिल हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. Now that is the second part. That is a major part. At site, when you are at site, uh, आपके जो plans है, जो revised schedules है, you revisit all those parameters, and considering the revised schedules, the revised resources, the revised time frames, you give a alternative plan to the government officers and all that, the consultants. उसमें क्या होता है कि वन थिंग तो इवन दे अंडरस्टैंड, बट विदिन से assuming the contract is of 12 months, तो आपको एक आधा महीने का आपको दे गिव यू अ लेवरेज, बट नॉट बियॉन्ड दैट. ऑफ कोर्स उसके बाद तो यू आर पेनलाइज्ड डे इन डे आउट, and naturally when this happens, you go in double shift work, and what you do at site just to make it up, and you start finding the resources which are cheaper, more economical. Not that quality में कम होता है, but you start literally scratching the bottom of the barrel. That is also very good sometimes, because you find alternative resources. कभी कभी उसमें ये मिल पाते हैं. As I told you, 5 contracts bad contracts होते हैं, 5 contracts में वो help करते हैं, bad contracts they also help. तो बाकी MSP ने कैसा हेल्प किया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने कैसे हेल्प किया, यू ऑलवेज हैव टू प्लान ऑल योर शेड्यूल्स, ऑल द सेक्टर्स, सभी सेक्शंस के इंडिपेंडेंटली, एंड देन उसको मर्ज करना पड़ता है. तो ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोगों को ये फ्रॉम ए टू बी जो मेरे को स्टार्ट करना. फॉर एग्जाम्पल पाइलिंग फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन में जब पाइल कैप करूंगा, आपको पाइल फाउंडेशन में अगर मेरे को इस एरिया में क्लियर है, तो पाइल उसका पाइल कैप स्टार्ट होता है, उसका कॉलम स्टार्ट होता है, उसका बीम स्टार्ट होता है, ब्रेसिंग स्टार्ट होता है, एंड देन यू हैव अ कर्वेचर. एक एक सेक्शन का बिल्डिंग खत्म हो रहा है, एक सेक्शन का मे बी इट इज स्टार्टिंग, वन सेक्शन इज, एंड देन यू कैन प्लान where to get your resources, the alternatives like electrical installations and all that. So उस टाइम पे it helps you in that way. So these softwares are very important. Like यानी आप when it is available, why not use it? That's more important, more than important. So was most of your interaction with this software was only at the report seeking level, where others would, the planning guys or the so-called trained guys on planning, they would produce reports for you, and these were the people who used to be required to be hands-on in the software. So were you more involved in the planning stage, No, or no, no. only As I for told the you, seeking of reports? yeah, as I'm telling you right in the beginning, I told you that India or the world is having a shortage of planning engineers. Number one. All right. This is basically for the simple reason that apart from some basic knowledge in your college or during your education, we are not imparting any more knowledge to these guys, and even these guys are not interested.
interested. Most of the engineers, be it mechanical, electrical, civil, anyone, instrumental, everyone wants to just work hands-on. It is not, they don't want to go into the planning section. अभी प्लानिंग सेक्शन में द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज देयर सो मच शॉर्टेज वी आर नॉट गेटिंग द राइट प्लान्स यू कैन टेक अ सिंपल एवरीडे जो डेली डेली एग्जांपल होता है अपने कॉर्पोरेशन के रोड्स देख लो दे आर डूइंग कंक्रीटिंग ऑफ रोड्स दे आर लेइंग द कंक्रीट दे आर फिनिशिंग द थिंग एंड देन दे रिमेंबर दैट अरे नीचे पाइपलाइन डालना था तो अगेन दे री एक्सप्लोइट तो दिस इज अ शॉर्टेज ऑफ प्लानिंग इंजीनियर इट इज अ फैक्ट it is a basic thing यानी इसमें planning engineer basic planning engineer ही नहीं है and everywhere you see the same problem now आपका यूनिवर्सिटी का फ्लावर तोड़ा है उसके अभी रोड्स जो वाइडन करने दे आर स्टिल नॉट एबल टू डू दैट उधर जब ब्रिज बनना चालू होगा जब पियर्स ले करने होंगे जब इरेक्ट करने होंगे where is the space again there will be choke ups this that what this is a problem कि ये planning engineering नहीं होता है हम लोग बड़ा plan नहीं कर पाते हैं and 2011-12 when I joined NCC it was worse so ये as I told you we had to train an engineer to be a planning engineer and reluctantly he sat on that chair but if you see these planning engineers अगर आपको contract बराबर manage करना है planning is very very important and for that one has to get this knowledge from not so expensive places like CAD and all CAD center these are going to help because everyone can't everyone is not very lucky to go for qualifications from NICMAR and all those places these are very expensive places Correct. So, so sometimes, the complexity of the projects also comes from this intricate complexity that there's a scarcity of people who can properly plan. So execution will bring its own challenges, but to begin with, the planning guys are also a miss, right? Planning So is not usually, only beginning; it is going to be ending also because you have to hand over the. It is ultimately it is कोई भी काम हो आपको तो एंड भी करना है चाबी भी देना है प्रोजेक्ट का तो वो प्लानिंग वाला ही देगा ना अल्टीमेटली द क्वांटिटी सर्वेयर द क्वालिटी एनालिसिस गाय दीज ऑल गाइस हु आर दीज अभी बिलिंग इंजीनियर हो गया अभी वो ठीक है बिलिंग इंजीनियर वाले को ही इज मोर इंटरेस्टेड इन ऑटोकैड उसको क्यों बिलिंग उसमें से निकालना है उसमें से उसको अभी ठीक है आज उसको ऑटोकैड 2D से 3D 3D फिर रेविट वगैरह एवरीथिंग इज कम एंड ये सब लर्न करेंगे लोग करते हैं और करना भी चाहिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब तक ये होगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं we have a country full of engineers who are willing to just jump into the fray of execution unless and if you see that more of major contracts be it contract from the government side be it from the private sector they are failing because there is no contract management abhi contract manage karna to you have to have a good planning guy always yani be it your boss be it someone who's knowledgeable there has to be a planning department in all the things it's not only आपने काम किया बिलिंग हो गया पेमेंट ले लिया चेक ले लिया खत्म हो गया बाद में लड़े that is not to be that scenario अगर आपको कट ऑफ करना है तो एक अच्छा प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए एवरीवेयर प्लानिंग तो होता है प्लानिंग तो होना चाहिए पर्सनल लेवल में भी प्लानिंग होता है भाई दोस्तों sir, usually when you're working in a big a big EPC project, what are the usual kind of work profiles on the site or in the company? Which all people come together to get all these projects executed? There's so many fields there are consultants from it begins with tendering stage पहले तो फिर then you are pre-qualified qualified and उसके बाद you come in contact with consultants so you understand the type of project the type of the nature of the job then at that time you start selecting your team कि मेरे को ये प्रोजेक्ट के लिए सपोज ये टीम मेरे को लगेगा एंड उसके बाद सब टीम लगेगा उनकी and at the time of contracting if at all you get the contract uske baad you start to sit in your office and you plan the resource management
उसमें रिसोर्सेज कैसे लगेंगे, द प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर अगेन, यानी प्लानिंग एज एन, अभी तो अभी तो थोड़ा बेटर हुआ होगा आई होप, प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर, यू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड यू टेल योर प्रोजेक्ट मैनेजर दैट बॉस ये इतने में आपको काम करना है, दिस इज योर लिमिटेशंस, द फाइनेंशियल लिमिटेशंस, दिस इज व्हाट यू द रिसोर्सेज यू बी गेटिंग, एंड देन यू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको इस टाइम पे ये मेरे को काम होना चाहिए। बिलिंग साइकिल कैन also also be planned properly. That is the time when you come to know that आपको ये सपोज 12 महीने का काम है, 24 मंथ्स का काम है, and the work is about 200 crores, तो आपको इन 24 आवर्स 24 मंथ प्रोजेक्ट में आपको आइडिया मिल ही जाता है कि हर महीने मेरे को 15 से 18 करोड़ तो मिनिमम मेरे को टारगेट अचीव करना ही है ऑन एन एवरेज। कोई महीने में ज्यादा होता है, कोई महीने में कम होता है, बेस्ड ऑन द fitments out from outer agency, the third party agencies. Lot of works are based on third party agencies also. The supplies from third party agencies, like it might be in that particular project it was rails from the third party, the prefabricated parts from the third party, colored coated sheets from the third party. So those were not manufactured in house. बाकी सिविल इज ऑलवेज डन एट साइट, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो आपके पास मटेरियल आता है, कंक्रीट स्टील सीमेंट, वो तो होता ही है, वो तो करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जहाँ थर्ड पार्टी वापस टाइल, इफ द टाइल इज ऑफ सम स्पेसिफिक क्वालिटी और क्वांटिटी, आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है। तो दीज ऑल जब तक आपके सब सेक्टर्स इफ यू से जब तक बराबर उनकी तालमेल नहीं होती है, एंड ऑफ कोर्स उसका एक डिपार्टमेंट मेरे को बोलेगा कि पहले मेरा काम करो, फिर दूसरा बोलेगा मेरा करो, ऐसे वो भी उनके भी ईगोस को थोड़ा सेटिस्फाई करना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईगो सेटिस्फैक्शन इज देयर ऑलवेज, तो उनके भी ईगो सेटिस्फाई करना पड़ता है, बिकॉज दे आर आल्सो हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। तो दैट इज हाउ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर कम्स इनटू बीइंग, यानी लिसनिंग टू एवरीवन, एंड वो अब सुनता सबका है और करता खुद का है। दैट इज हाउ कंपनी। नहीं, मुझे उस समय की आपकी बहुत सारी स्टोरी याद है, उसमें से मुझे एक स्टोरी याद है, किसी ओपन प्लॉट पे यू नो some material was put, and that site was to be vacated, so there some erection or some foundational work should have been there, but the material was kept on that site, and these two contractors started feuding with each other कि वो मटेरियल कौन हटाएगा। सो डू यू रिकलेक्ट यू नरेटिंग में दिस स्टोरी? वो तो हर साइड में होता है, इट इज नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर, वो तो हाँ, अच्छा, एवरी अदर साइड, बिकॉज हाँ, अगर मेरे को कुछ मटेरियल डालना है तो मोस्टली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ही साइट देता है रखने के लिए, खुद का हाँ, तो सब प्लॉट्स खरीद नहीं सकते या रेंटल पे भी लगाते हैं, चलो। तो वो प्लॉट पे था और उस टाइम पे किसी और का सामान भी पड़ा था, एंड सी मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वो दूसरे के साथ भी लिंक्ड अप होते हैं। अगर मैं रोड बना रहा हूँ तो दूसरा कोई ब्रिज बना रहा है, अगर कोई ब्रिज बना रहा है तो आगे वाला कोई टनल बना रहा है। तो दिस इज हाँ, हाउ द सपोज एक सिंपल रोड का कंस्ट्रक्शन में होता है, तो देयर आर सब कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप नहीं ले सकते हो, पार्ट्स आर गोइंग टू अदर पार्टीज आल्सो, अदर स्टेक होल्डर्स आल्सो देयर, तो को एग्जिस्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले फिर हम आपस में लड़े कुछ मरे, अल्टीमेटली तो यू हैव टू, यानी ऑन पेपर यू विल बी फाइटिंग ऑलवेज डे इन डे आउट लाइक एनीवन एल्स, एनी अदर एनिमल, बट जब साइट पे होता है यू हैव टू बी वेरी कर्टियस टू ईच अदर, कैसे भी अपना काम सटाना होता है, निकालना होता है, एंड वो तो तालमेल में काम करना ही पड़ता है। वो तो अभी जो मटेरियल था वो हमने निकाला बिठाया, उसने भी हमारा मटेरियल कुछ निकाला होगा, हमने भी उनका निकाला होगा। देयर आर सो मेनी अदर इंस्टेंसेस जिसमें ये होता ही रहता है, इट इज नॉट वन ऑफ, वो तो दिन रात ऐसे तो होता ही है। देयर सो मेनी पिलफरेजेस आल्सो समटाइम्स कि हमारा माल उसने चोरी अच्छा, करके गया, कभी ये भी हो सकता है। That is also a problem in this restricted sites, because suppose I'm working for 10 hours in a day and someone else will be there after that 10th hour, or maybe he comes in only on the 11th hour, तो मेरे रिसोर्सेज उधर पड़े होंगे, आई कैन कीप अ वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर्स, क्योंकि बीइंग अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। वो उस टाइम पे पिलफ्रेजेस होते हैं अकाउंटेड, यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट नाउअडेज यू कंसीडर एटलीस्ट 3% इन पिलफ्रेज। okay, that's a pretty decent amount.
सर यूजुअली जब ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से जब पीछे चल रहे होते हैं तो हाउ डज प्रोजेक्ट मैनेजर देन कोप अप विद दैट शेड्यूल प्रेशर? क्योंकि एक तो पहले कॉस्ट प्रेशर रहता है, देन देयर आर इश्यूज दैट यू हैव टू हम्म comply with the quality standards. तो उस हम्म वक्त हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स देन कोप अप विद द लैग ऑफ वर्क? कैन यू टेल अस couple of practical anecdotes that you must have encountered? सी सर एक सेकंड, प्रतीक्षा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना सर, आपका स्क्रीन। या एज यू आर सेइंग दैट उस टाइम पे कैसे होता है, उस टाइम पे ऐसा होता है, यू हैव टू टेक सम स्पेशल परमिशन, कभी कभी यू विल हैव टू थोड़ा इंसेंटिवाइज करना पड़ता है स्टाफ को, एंड थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, और थोड़े से रास्ते निकालने पड़ते हैं विद द, एंड सी एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू, नो वन इज देयर टू, अगर इन द इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन कंपनी हेल्प यू, बी इट अ डिपार्टमेंट, बी इट गवर्नमेंट, बी इट एनी अदर जेंटलमैन, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, नो वन इज देयर टू जस्ट पुल योर लेग, तो देयर पीपल आर देयर, एंड मेरे लाइफ में तो मैंने काफी अच्छे लोग देखे लकीली, तो देयर जो अगर शॉर्टफॉल होता है तो इन उनके ऊपर थोड़ा बहुत उनसे प्यार से बात करना, उनसे थोड़ा, क्योंकि दे आर वर्किंग हार्ड, एंड नॉट दैट व्हेन दे आर वर्किंग हार्ड इन द ओवर टाइम कर रहे हैं तो आप जाके घर में जाके सो जाओ, आप सो रहे हो, आप अपने घर जा रहे हो, बेशक जाओ, लेकिन यू शुड बी इन टच विद देम, उनका बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका अकोमोडेशन का, उनका पर्सनल लाइफ में उनको कुछ फूड अलाउंसेस होते, बिकॉज ऑल दीज engineers mostly when they come to your site they even if they are married they are bachelors at site, so because they come from far, and it was mostly South Indian and people and engineers from Bihar, so these were the staff what we had, so these were willing to put in their blood and sweat at site, so they are willing to work when they are coming from so far, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, आपके सुपीरियर्स को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, बट दैट इज हाउ द वर्क गोस, प्यार से कराओ और बढ़ाओ काम को, ऐसा होता है। So usually when people join their first job, some of them have zero idea how to work in a professional manner. So I'm sure that you must have also faced certain हम्म challenges while dealing with this first time jobbers or the freshers on the first time. तो कोई challenges के बारे में बताइए सर, कि जैसे as a boss, because we the whole agenda of this हम्म corporate connect initiative is to prepare our boys and girls for the corporate level jobs. So as a boss, what problems or challenges have you faced from these freshers? Can you give some anecdotes without maybe सी spilling the द names? थिंग Yeah. इज, यस द थिंग इज, इफ यू आर प्रोजेक्ट इंचार्ज ऑफ द साइट, नंबर वन, दिस साइट के जो भी इंजीनियर्स होते हैं या जो भी प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, वाई ओनली इंजीनियर स्टाफ, राइट फ्रॉम योर मोस्ट इम्पोर्टेंट डेप्यूटी मैनेजर टू द प्यून, दे आर टू बी ट्रीटेड एज अ फैमिली, तो जब तक वो फैमिली करके आप उनको ट्रीट नहीं करते हो, नथिंग विल मूव अहेड, एक तो नंबर दैट इज अ बेसिक, दैट्स अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, एवरीवन हैज टू लर्न, कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया तो यार मैं बड़ी गाड़ी में आ रहा हूँ, या मेरे को कंपनी प्रोवाइड व्हीकल एंड यू आर गोइंग टू कम इन सेकंड क्लास पास, आपके पास सेकंड क्लास का ही पास है, तो यू डोंट हैव टू थिंक दैट ऐसे अपने, बिकॉज यू आल्सो ग्रोन फ्रॉम दैट, you should never forget your past, you have also come from that, you have climbed the ladder, तो आपको जो नॉलेज इम्पार्ट हुआ है, जो नॉलेज आपने अभी तक जो गेन किया, दैट शुड बी इम्पार्टेड, नंबर वन, एंड यू हैव टू विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये बच्चे में ही इज वेरी कीन टू वर्क एट साइड, he is very keen to work on billing section, he is very keen to work on quality analysis एंड सो फोर्थ, कि इसको आगे चल के क्या बनना है, वो वही बच्चा बताएगा, वही फ्रेशर आपको बताएगा, एंड इट टेक सम टाइम ऑफ कोर्स, कि आपको एक यू कम टू नो उसके ट्रेड से अबाउट 15 days टू अ मंथ के अंदर,
पहला month तो it is anyway, you have to understand, it takes some time to understand even one family member कि एक महीना तो उनको दो. My mother used to say that even कि बच्चा भी पैदा होता है तो 9 months के बाद ही हमारे को मालूम पड़ता है कि बच्चा कैसा होता है. तो दिस इज एटलीस्ट वी शुड गिव 1 month to that child, to that fresher. So assign jobs, considering his क्या बोलते हैं उसके जो हमने फाइंड आउट किए हैं कि इसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और उसको वही वही हिसाब से उसको काम देना चाहिए, ना कि उसके कंफर्ट जोन से बाहर के काम उसको डेलिबरेटली दो और उसको और भी नीचा करो. जो उसके कंफर्ट जोन में है उसको वो पहले काम दो. तो देन यू कैन टीच देम कि कौन से, एंड देन दीज प्रेशर्स विल बी देयर ऑलवेज आप बिहाइंड योर बैक कि ये सर मैं कर लूंगा, ये आई विल डू इट. But for that first month, for the 2 months, first couple of months, you need to understand them. You need to impart some knowledge from your experience to them. तो ऐसा है, they come with a clean slate. तो उनके पास Come with a कोई clear ज्यादा slate. knowledge होता नहीं है. You have to impart. You have to become the teacher at uh, your office. I'll not say site office. It is a, because हम लोग कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, एक बैंक है, बैंक का भी ब्रांच मैनेजर अपने स्टाफ अगर कोई नया आता है पहले क्रेडिट कार्ड बिकवाता है उसको. तो उसको भी ऊपर जब तक वो उसको पहले समझना पड़ता है कि एक महीना के उसको क्रेडिट कार्ड बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, बाद में उसको इंश्योरेंस बेचने को लगा तो उसके क्या ट्रेड्स है. तो इट इज एज सिंपल एज. तो Sir, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या मैनेजर है तो आपने उसको या आपके पास आ गया, then so as a you should Mahesh sir, just put as on a some job, burden on that fresher. okay. Sir, as a job seeker, what practical skills or competencies they should upgrade themselves on? What are the demands of time today on the from a civil engineer? See, I'll tell you one thing. Uh, India is a growing economy right now. All right. Now, I am going to speak for most of the freshers. I'm not going to speak only for engineering children or freshers and all. I'm going to speak on the overall thing scenario. Last year or this maybe end by mid of this year, we will be touching a turnover of, we will be an economy of $3.5 trillion Brilliant. economy it will be. And we have a plan, the Prime Minister has a plan of touching this, of his 5 trillion economy by the end of next year. We already delayed by an year because of the COVID and all that. So there is lots and lots of, and be it infrastructure, and naturally the base जो होता है काम का, or the economy runs on infrastructure project. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता है, बढ़ता है, तो उसके साथ दूसरे भी फील्ड्स खुलते हैं. अगर मेरा रोड का भी, only yesterday, day before yesterday, I came to know that Surat to Chennai expressway is coming, super expressway is coming, 6 lane road. तो नेचुरली उसमें क्या बेनिफिट होगा कि वो रोड पे जो भी अलाइंड होगा, जो प्रॉपर्टीज होंगे उसके प्रॉफिट कम अप, एंड देन योर बैंक्स विल कम अप. देन जो उनके साथ जो अदर लिंक्ड है, यानी नेचुरली यू हैव टू फंड द ह्यूज प्रोजेक्ट, द बैंक्स विल आल्सो be ready, they will also be running behind the agencies. Or and everyone is, as I told you, it is a web, it is a big web. Industry is not only one particular industry, उसमें सब सब जब साथ में काम करते हैं तब वो बढ़ता है. तो शहर में जो सिटीज में होंगे उसमें होटल इंडस्ट्री पड़ेगा. अभी नेचुरली मैं, इफ आई एम एन इंडस्ट्री, इफ आई एम कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मैं और मेरे को बड़ा काम प्रोजेक्ट मिल गया तो नेचुरली आई विल बी आल्सो लुकिंग आउट फॉर अ बिगर ऑफिस, बी इट लीज्ड और बी इट ओन. तो मैं एक बड़ा प्रॉपर्टी लूंगा रेंट पे, भले ओन लूंगा, फिर उसमें इंटीरियर डेकोरेटर को भी लगाऊंगा, टेबल लगाओ, फर्नीचर लगाओ. अभी वो जेंटलमैन आ गया तो उसको उसको डिटेल्स देंगे हम लोग कि मेरे को ये बजट में ये फर्नीचर बनाना है. तो देन उसके लिए जो उसने इंटीरियर डेकोरेटर वाले को काम देना है तो उसको रेविट आना चाहिए, 3D एस मैक्स, 3D
एस आना चाहिए, एंड सो फोर्थ, उनको उनके सॉफ्टवेयर आने चाहिए। तो दीज गाइज आर नॉट जो क्वालिफाइड आज की डेट में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो निकमार एंड ऑल दो जो बिग इंस्टीट्यूट्स है, वो पीपल आर, वी आर नॉट कंफर्टेबल कि हम लोग 4 years कॉलेज करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद निकमार में जाकर 2 साल और फुल टाइम काम करें, अब पढ़ाई करें, एंड दैट इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, 8 lakhs 10 lakhs उनका फीस है। Everyone doesn't have, very less people are there. So ultimately people have to earn and learn. They have to come to institutes which are smaller, which are closer to these all these sites, these projects. जैसे assumption, तो शेरगढ़ में कोई कैड सेंटर होगा, उधर मेरे को भले वो छोटा ही हो, लेकिन उधर मेरे को कोई ना कोई इम्पैक्ट, कोई ना कोई कॉस्ट तो मिल ही जाएगा उधर मेरे को नॉलेज इम्पार्ट करने की। तो देयर विल ऑलवेज बी समवन यानी टू हेल्प यू आउट इन अ स्मॉलर सिटी आल्सो। तो इफ वो रोड पे मेरे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना है, तो ये सब भी आने वाले हैं। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो नेचुरली जो फ्रेशर्स है, दे आर कमिंग विद क्लीन स्लेट। उनको जो डिफाइन, उनको जो रोल्स उनके लाइफ में जो उनको सेटअप करना है, दीज आर द गाइज दे हैव टू डिसाइड इफ दे वांट टू गो ऑन साइट, दे हैव टू अंडरस्टैंड ऑटोकैड प्रॉपरली। में भी काम लगता है बेसिक सर्वे। अगर आप उनका रोड अलाइनमेंट बराबर नहीं हो, इधर उधर हो जाए, वो पहले जमाने में था, बट दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग, चेन फेंका और चेन के हिसाब से आपने रोड बना लिया। तो अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी तो टोटल स्टेशन आर ऑल्सो ऑटोकैड के बेसिस पे चलते हैं कि आपको अलाइनमेंट करना है, ये करना है। तो बेसिक 2D जो है उसका आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज बना रहे, उसके पियर्स के जो वो ऑटो कैड से आज की डेट में आप वो मार्को, ये बच्चा पहला सपोज जिसको साइट में इंचार्ज एम या सर, एमएसपी के बारे में तो बता दिया आपने सर। ऑटोकैड के बारे में मुझे बताइए कि हाउ हाउ ऑटोकैड इज इम्पोर्टेंट, और कैसे होता है काम ऑटोकैड पे, और बच्चों ने कैसे सीखना चाहिए ऑटोकैड को। हाँ। as I told you earlier कि AutoCAD is a basic tool today's industry, and be it my field, be it your field, be it anyone's field, यानी in engineering of course। तो उसमें एज अ टोल्ड कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहा है, तो नेचुरली इट इज नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ भी जो कनेक्टिविटी कनेक्टेड इंडस्ट्रीज है, लाइक रियल एस्टेट, लाइक योर इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्चर, अभी इनको सबको बेसिक अगर ड्राइंग्स बनानी है तो वो तो ऑटो कैड में ही बनने वाली है। करेक्ट एंड सर। वो जब तक नॉलेज आपको बराबर पूरा नहीं मिलता है, यू विल नॉट सक्सीड फुल्ली। आई विल नॉट से फेल, बट यू विल नॉट सक्सीड फुल्ली। तो साइट पे अगर मेरे को आज की डेट में कि साइट पे भी मेरे को अगर काम करना है, तो उसके लिए भी ऑटो कैड चाहिए। द सर्वेयर नीड्स ऑटो कैड बिकॉज आज की डेट में इवन द टोटल स्टेशन दोज आर बेस्ड ऑन ऑटो कैड। उनकी भी बेसिस, उनकी भी कैलकुलेशंस, उनके भी सेंटर पॉइंट्स जो भी है वो भी ऑटो कैड से ही आपको हेल्प मिलता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज मैसिव। जब हम्म। 19 में आई टेल यू, आई वाज परसुइंग माय फाइनल ईयर डिप्लोमा, एंड उस टाइम पे वन ऑफ द सेमेस्टर्स आई डिड नॉट क्लियर। तो एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर दैट मैं उनको रिप्लाई क्या दूंगा, तो सो दैट आई शुडंट वेस्ट माय टाइम। उस टाइम पे अभी जैसे कैट सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे कंप्यूटर पॉइंट था। हाँ। हाँ, तो मैं उधर जाता था सीखने के लिए, नॉट कैड बट बेसिक, आई विल नॉट से सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ही था तभी तो। वर्ड सिखा, लोटस सिखा रहे थे, डेटाबेस सिखा रहे थे। तो दीज आर द अच्छा। प्राइमरी। ओके। और उस टाइम पे कंप्यूटर पॉइंट वाज वेरी बिग इंस्टीट्यूट, यानी वेरी बिग, जैसा एनआईटी बाद में आया इनफैक्ट। तो उस टाइम पे कंप्यूटर यस पॉइंट, यस। तो आई टुक माय ग्रैंडफादर आफ्टर आई कंप्लीटेड माय कंप्यूटर पॉइंट से मैंने सर्टिफिकेशन जो भी मैंने लेना था मैंने ले लिया, टॉपर था, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न। और मैंने वो
I got the certification. एंड उसके बाद आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर मैनेजर कि मैं उनको बोला कि कंप्यूटर खरीदना है एंड मेरे को ये ऑटो कैड मैंने सुना है. उस टाइम में गूगल गूगल तो था नहीं कुछ ज्यादा. एंड मैंने पढ़ा है करके कि ऑटो कैड करके कुछ होता है करके. दिस वाज इन इन्फेंसी, टोटली इन्फेंसी. तो आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम दैट बॉस मेरे को ये सीखना है, मैंने सुना है कि इसमें एक लाइन ड्रॉ करने से आपको लेंथ मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है. he was aware of that but he was not very, यानी 100% उसको भी नॉलेज नहीं था बिकॉज वो था नहीं इतना. देन ही ऑल्सो Yes, फाउंड yes. आउट, या एंड उस टाइम पे दिस वाज, एंड मैंने बोला मेरे को कंप्यूटर भी खरीदना उसके साथ. तो उसने जब रेट बताया मेरे को 1,25,000 अभी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द कंप्यूटर. तो उस टाइम पे उस टाइम पे कंप्यूटर का कीमत था. एंड आई डिडंट बाय कैड बट आई बॉट द कंप्यूटर. I took my grandfather there. I bought the computer after 2 years. So I took my grandfather there. I told him कि आप भी समझो ये क्या है and we should do this और ये सब मेरी कैलकुलेशन बहुत फटाफट निकल जाएगी. तो वो जो बच्चे में जो उस टाइम पे मैं 18 years 19 years का आई वाज अ किड. तो आई हैड दैट इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग. तो आज के जब तक जो बच्चा जब तक इफ ही डजंट शो हिज इंटरेस्ट तो इट डजंट हेल्प यानी. तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वो उस टाइम पे मैं लेके गया एंड देन आई, वो फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ ऑटोकैड जो होता है उसने मेरे को दो चार लाइंस ड्रॉ करके दिखाई बिकॉज दैट इज व्हाट ही लर्न. और मेरे को आके मेरे को दिखा रहा है कि सर ये मेरे को मालूम है इतना, इट्स अ ह्यूज सॉफ्टवेयर एंड इट इज टू बी अपडेटेड एवरी ईयर. मैं बोला यस. तो बट एंड he was calling me sir because उस टाइम पे being an 18-year-old I had applied for a job as a trainer then. कि मेरे को टॉपर हुआ हूँ, ये हुआ हूँ, एंड आई वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माय एज एंड माय गुड लुक्स, यंग गुड लुक्स. You're still good looking, sir. मुझे बोला नहीं इतना यंग बच्चा नहीं पढ़ा सकता है बड़े बुड्ढों को. बोला, ठीक है. तो वैसे वैसे मैंने ऑटोकैड फर्स्ट टाइम जब व्हेन आई वाज 18 आई वाज हैविंग इंटरेस्ट इन गेटिंग दैट. थोड़ा लेट आया मैं आपके पास लेकिन मैं आ तो गया. और Yeah, yeah, yes, yes, yes. बट सी यू हैव टू हैव योर इनबिल्ट इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये मेरे को करना है. तो ये फील्ड्स तो आने ही वाले हैं. और ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए सी ऑटोकैड या एनी अदर सॉफ्टवेयर फॉर दैट मैटर, institutes like yours or so many other institutes, they should start tapping. It should be now ulta. Because if the student is not coming to you, you should start going to the industry and you should tap them कि बॉस तुम्हारे को ये लेना पड़ेगा. अल्टीमेटली विदाउट दिस यू शुड नॉट, you should reject those you should not promote those freshers जब तक ये सीख नहीं जाते. आई विल नॉट से रिमूव, एट लीस्ट नॉट टू प्रमोट. कि प्रमोशन नहीं होना चाहिए जब तक ये सीख नहीं लेते. और सीखें और कट फ्रॉम द सैलरी, रिटेन फ्रॉम द सैलरी, वॉट एवर योर फीस जो भी. अगर आप प्राइवेटली आप पढ़ा रहे हो 100 रुपए में, उनसे आप जाके 95 रुपीज में ले लो बिकॉज यू विल बी हैविंग मोर क्वांटम. तो that is that is how you will also increase your business, not only your business but you will be imparting more knowledge to these guys and it, we'll have a better society because फिर हमारे failures will be less, works will be completed faster. तो दिस विल ऑल हेल्प यानी बिकॉज नहीं तो हम लोग ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड ही कर रहे हैं. और बहुत सारी अभी भी छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो अभी भी ट्रायल एंड एरर से करते हैं. पेंसिल हाथ में पकड़ के बैठे, मैंने जैसे पकड़ करके रखी है. तो वो 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 पकड़ के ही रखेंगे. तो जब तक ये होता नहीं है, यानी समटाइम्स द वेल हैज गॉट टू गो टू द हॉर्स. इट इज द हॉर्स, इफ हॉर्स इज अनविलिंग यू कांट डू इट एनीथिंग बिकॉज ही मे बी he may be having his financial difficulties, time constraints. You know, don't know what is the reason, yeah, why they are not coming to you. That is, it is not only कि उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, मे बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे या घर की कंडीशन ठीक नहीं होगी. तो वो सोचेगा ना मेरे को सैलरी में से कट करके कोई दे दे. द ऑफिस शुड इम्पार्ट दिस, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, दे शुड इम्पार्ट दिस क्वालिफिकेशन टू मी. So that is how some tie-ups should be there now. This is high time that we work on tie-ups. Right. Sir, this is our colleague, Mr. Alok. Alok, this is Mahesh, sir, today's guest speaker.
So we for long, I was contemplating in this on this fact. So let's say, for example, you participated for project planning with us in 2013. Yeah. So every year we enroll about 10,000 courses at our places. But Hmm. every time the difficulty is same, that once they exit out of our office, there is no way that we are connected. So I was Yes. contemplating and brooding over this problem, that how, because it was kind of bothering me. So to solve that problem, that how we can provide continuous support, and how when we evolve in our knowledge level, and how the new versions of software come, the newer software come, the newer competency and ability as built in the software. So how can that knowledge be given to my prior students? So I was, so as a solution to that, we have now come up with a new continuous support system, which is a three-leg stool. The first part of it is a e-learning portal, which has got about 2,000 GB of civil interior and architectural courses. The second part of it is, we are extensively doing job studies and telling our students that this is the nature of the job, this is how the practical work environment is, these are the skills that are required. We are preparing them for the interview. And third, which I'm, absolutely pleasured about, is getting the interaction and mentoring from your level of experts. So I would request Alok sir. So we would like to have a comment on our e-learning portal. Alok sir, can you just explain, sir, how we have devised our curriculum? Yes, sir. Yes, sir. Is it screen is visible? Yes. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Sir, as Kaustubh sir told you that we do have three sections for each: civil, mechanical, and architecture and interior design. Hmm. So, for architecture, we do have architecture skill up, architectural design fundamentals, and architectural modeling fundamentals. So, for each section, we do have skill up, design fundamentals, and modeling fundamentals section, sir. Hmm. So, right now I'm opening just civil sections. So in civil section, sir, as sir described that we do have job study sections. So in job study sections, we do have different companies. Job studies means we provide students about their job openings, how you can prepare for that companies, which softwares you need to prepare for, and all about the company profile means वो कंपनी अभी क्या कर रहे हैं, उनका अभी एक्चुअली उनका काम क्या है और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है. Hmm. Okay, so we ये आप educate. बताते हो. Yes, we But educate this is them. only, this is like a campus recruitment के time पे आप बताते हो, यानी is it that way? Does it work that way? It's just about sir means ये ओपनिंग जब हमारे पास आते हैं सो वी इन्फॉर्म टू स्टूडेंट्स दैट कंपनी अभी आपसे क्या डिमांड कर रही है. मतलब आपको अगर कंपनी के लिए अप्लाई करना है, एक्चुअली Hmm. मेनी ऑफ स्टूडेंट्स मोस्टली डोंट नो द कंपनी नेम्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएनसी कंपनीज. उनको Yes. पता ही नहीं होता है कि सर सॉफ्टवेयर पे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए. Hmm. ओनली सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड और अदर सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड. Hmm. So regarding for preparation, we guide them for preparation purpose point of. Hmm. This is about job study, sir. Hmm. Show some these courses, Alok. Skill with Space design. space designing courses. Yes, sir. So, sir, this is one of the best course that students most favorite course we can say that
students like this course most, space design and its application. This So is sir, going to be what for interior decorators, or is it only for civil engineers also? this is for sir civil engineers, interior designers, as well as are for architectures also. All right. Yeah, because what we did, sir, uh, there is two parts of this course. First, in theoretical part, there is 7 easy steps to design a beautiful home. That is all about space design theory. Hmm. So it includes all theoretical part like bubble diagram, flow of traffic, how to identify client need, circulations. Okay, so this all about theoretical parts, how we can design any space. And on the basis of this theory, we teach students to actual practical applications on AutoCAD. Means Hmm. whatever they have learned in this theory, that how they can use this theory part to create a model or to create a drawing on AutoCAD. All right. So those same steps we have explained, but by using its application in software, sir. Okay. Then one more another course, sir, that is about Vastu Shastra, sir. Hmm. Yes. So in this course, sir, we have explained a few concepts about related to Vastu Shastra, because most of the students are demanding this course because they don't want to learn AutoCAD only. They want to learn AutoCAD to create a plan on the basis of Vastu Shastra. Correct. Yep. So in this course, we have explained about few concepts regarding to Vastu Shastra. Mm-hmm. So how they can use Vastu Shastra concepts, Vastu Shastra fundamentals while creating any particular drawing. All right. So we would like to have your comment on this new model of teaching. These are all e-learning portals, sir. Yes. They need to purchase an annual subscription, just like Netflix. Hmm. And because a lot of civil engineers want to start their own construction of residences. So many Yes. of them, students who come to our place are well versed with the tools. Let's say AutoCAD, Max, SketchUp, or even Revit. But if you ask them a simple question that what is the minimum space required for a family of four, can you accommodate them and then put it on AutoCAD? So they may be able to draw the lines, but they don't know the space designing aspect of it. That how much space is required, ergonomics, circulation, what needs to be considered. So what we have done is we have begun with space designing 7 steps. We have included Vastu, we have included bylaws, where we have taken the RERA laws, how they have to be implemented. Then we've given them illusion methods. Now currently I'm working on a course on kitchen designing, which shall be ready by this weekend. Then we are getting into bathroom design. So anybody who wants to start his own construction or wants to get into interior designing, because there's a lot of money when you Hmm. design the independent homes for interior designers. Yes. So we want to prepare them for those kind of bigger opportunities. I would like to have your comments, sir, on each of these topics. How do you find this new continuous support? It was not there when you were a participant. No, I wasn't. I wasn't. You weren't there. Yeah, it wasn't there. It wasn't there when I was there. It was Yeah, from yeah. 2013. I cleared both the certifications by 2014 only. So, 2014. it was Correct, sir. quite some time. Yeah. So, yeah. So what is this? Is the time limit of what? How many weeks it is? Yeah. And what is This the is cost? these are self-learning courses All right. where this Vastu Wala is a 60 minutes program. Space Okay. designing theory is 90 minutes, and space designing with the help of AutoCAD is about 4 hours course. So all those theoretical things have not been translated Hmm. on the AutoCAD tool. These are fantastic ideas, but are you only marketing it? Yani, how are you marketing it? That is the question. We have about people usually inquire with us, and we'll be taking to the colleges as well. No, not So the usually college. what I think the existing
existing interior decorators or something of that sort should be. I don't know how it will work, but some idea has got to be worked on. It's a fantastic Yeah, concept. yeah, yeah, yeah. It's a fantastic Yeah. So concept. just how do you see the utility value? Because we started with this goal that our students shall be empowered to make more money in their careers. So what's your comment? Will this learning these courses help them make more money in their careers? Have a better Important. designation, have a better, yeah. See, important is not making money. Important is coming up to that level of knowledge. And knowledge is very important. Money to will come or not come. That is a separate issue. If you are good in your competencies and all that, money will come. Money तो कहाँ जाता नहीं है यार. अ, यानी उसके लिए तो मनी के लिए तो मेरे को नहीं लगता हमें काम करना चाहिए नंबर वन. Hmm. This is very important of what you're doing, but unfortunately, what I'm seeing is only two have enrolled for this Vastu as on right now. What I'm seeing. So that means there's a deficiency in the marketing of this product. Maybe Hmm. who is enrolling with you, they need to. I don't know what is the cost of this, but who is going to enroll with you? You need to give them this So this vibe. this is a dummy login. Yeah, There are yeah, fair. about All right. 35 students Okay. who have already No, I subscribed thought for it's the it's program. not a dummy. I thought it's a real time thing. It But is a dummy for us to showcase to अच्छा. these are demo version, sir. ऑलराइट, Yeah, तो ठीक है, yeah, व्हाटएवर. तो मार्केटिंग अगर आपका ठीक ठाक है तो आई थिंक द इंटीरियर डेकोरेटर्स वुड बी वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर वास्तु. दे विल बी वेरी कीन टू हेल्प देयर. एंड आई थिंक इंटीरियर डेकोरेशन का काम तो अभी सभी लोगों को करना है. एंड एज आई correct. अंडरस्टैंड देयर इज वन मोर पर्सन whom I know whose wife started with CAD ट्रेनिंग में सिखाने एंड देन शी मूव्ड ऑन टू इंटीरियर डेकोरेशन. तो Okay. तो ऐसा भी है. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौस्तुभ, ऐसा भी होता है ना. Yeah, absolutely. Because हाँ तो interior designing is a very democratic and secular place. It can accommodate a lot of us. तो ये And तो and ultimately, क्या है, sir, कि there is a lot of if you see revenue opportunity wise, when you take नहीं, रेवेन्यू contracts इज with देयर. रेवेन्यू material, रेवेन्यू yeah, yeah, रेवेन्यू तो तभी जनरेट होगा जब व्हेन यू आर हैविंग गुड मार्केटिंग स्किल्स ऑफ योर ओन. अभी ऐसे ही right, उसमें तो कोई right. इंटीरियर डेकोरेटर बन नहीं सकता है. यानी उसमें कुछ तो भी नॉलेज होता है. सी देयर इज लैक ऑफ इमेजिनेशन. अर्लियर यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि इंजीनियर्स फ्रेशर्स को क्या क्या होना चाहिए. देयर इज अ लैक ऑफ इमेजिनेशन. वो Mhm. इमेजिन नहीं करते. एंड ये जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम है या जो दीज आर फाइनर, दिस विल गो इनटू फाइनर आर्ट. अभी आपके ऑटो कैड में Absolutely. वो स्कल्पचर एंड आर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट. यानी उसमें तो इफ यू सी जो पिक्सार का जो लैम्प भी बना था वो ऑटो कैड में पहले जनरेट हुआ था, फिर उसको 3D बनाया था, उसके बाद उसका प्रिंट आउट हुआ था. तो इट इज हाउ मच यू वांट टू लर्न. एज आई टोल्ड यू, एज आई इन्फॉर्म यू अर्लियर, कि वो नॉलेज ग्रास्पिंग जो है वो कितना लेना है बच्चे को या फ्रेशर को, दैट डिपेंड्स ऑन हिम. And next thing is marketing. Marketing is very important. You have to move with the tide. And interior decoration is a massive field. I agree, because अगर infrastructure बढ़ रहा है तो offices space बढ़ेंगे. Office space बढ़ेंगे तो naturally उनके offices की designs का काम बहुत बढ़ता है. और naturally जो staff आने वाला है उनका खुद का घर भी with the size of the flats getting smaller, apartments getting smaller, naturally उसको maximum utility कैसे करना है with rising costs. तो वो तो अभी सब इंटीरियर डेकोरेशन का काम तो बहुत बड़ा है. एंड दिस मार्केट इज देयर. आई वुड इट इज you're doing it very, it's a very good concept. Actually we should be the, ये जो mentors है, these guys should be the ones who should be actually taught first कि कैसे करना है. एंड देन वी शुड इम्पार्ट टू आवर, वी शुड प्रेस आवर staff to go and join you on something on that, on those lines also, that can be done. So I think first Absolutely. this is a good idea. Basically आप जो अगर आर्किटेक्चर फर्म्स जो इंटीरियर का ही काम करना चाहते हैं तो उनको पहले जाके टैप करें एंड यू टेल देम दैट दिस इज व्हाट. अगर उनका टैप होता है तो दिस इज अ फैंटास्टिक फील्ड.
This is a super Absolutely, piece. absolutely. Yeah, Thank you, Alok, for sharing. yeah, Mahesh sir, thank you for your valuable time. It was yeah, absolutely pleasure interacting with you. I yeah. think it was almost after a few years that we could interact. And thank Yeah. you. I think the job seekers or anybody on our YouTube community watching you and getting your mentorship, we really cherish that, sir. Thank you very much. Thank you, Pratiksha, for hosting, and thank you, Alok, showcasing our portal. Yeah, Yeah. thank Yeah. you. Thank you. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you. Bye-bye. Yeah. Thank you, sir. Ciao. Yes.